Okay. So, hello, good evening, everyone. Happy Teachers' Day to all of you. So, let's start the class. In the last class, what we have discussed? That was simple cubic lattice and body-centered cubic lattice, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, today we are going to start our next type of lattice, that is face-centered cubic. Okay. That is FCC lattice, face-centered cubic lattice. Okay. So, can anyone tell about the FCC lattice? What is FCC lattice? Sir, it also has lattice at the faces. Sorry? फेस के आइटम्स होते हैं सिर्फ फेस पर ही होते हैं? नहीं सर कॉर्नर्स में भी कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होते हैं. Yes. Okay. So basically, I'm writing some property of the face-centered cubic lattice. So atoms present at corner and also at faces. How many faces are there in a cube? 6. 6 faces. Okay. So at the each corner, atom will be present and atom will also present at the each faces. So how this figure will look like? एक बार इसको ड्रॉ करते हैं एफसीसी लैटिस को. आप लोग भी ड्रॉ करना. So this is our cube, and like usual, in the last previous two cases, we have taken the side as small a. So here I am again taking the side as small a. Side of the cube is small a. So face-centered cubic, that means atom at each corner. Let's put each atom at a corner. There's a 8 corner, so there will be 8 atoms, right? And atoms at each face also. One will be at this face, one will be at this face, one will be at downward face, one will be at upper one face, and remaining two, one will be backside, means this at this face, and one will be at our side, means जिस तरह हम खड़े होंगे ना एक क्यूब को देखने के लिए, तो हमारी तरफ जो फेस होगा उस पर एक एटम होगा. तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से शो कर देता हूँ. लेट सपोज यहाँ पर मैं बना देता हूँ. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? एवरीवन क्लियर हाउ द 6 faces are there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. So what we will do here, we will find out each and everything just like we did in last two cases. First of all, what we had found? We had found the effective number of atom in a unit cell. Then we found the relationship between radius of atom and edge length, that is lattice parameter R versus A. Third one, that was the atomic packing fraction. And after that, the coordination number and second and third nearest neighbor distance, right? So in a similar thing we will do here, and similar thing we will do in upcoming lattice also. Okay. So first of all, tell me, what will the volume of this unit cell? A cube. Volume of the unit cell will be A cube, right? So is it visible here? Yeah. Volume will be A cube, because cube, basically this is a cube, no? So volume of the unit cell will be A cube. Can anyone tell what will the value of effective number of atom? N effective? 4. 4 N effective? Everyone clear how it is 4? सबको clear है 4 कैसे आ रहा है? Yes, sir. Okay. So although I am writing here, see what I told you, the formula which I told you, that is N effective was 1 by 8 times the number of atom at the corner, right? Plus 1 by 2 number of atom at the
face plus number of atom at the body center. यही बताया था ना? So atom at each corner will be shared by 8 cubes. That is 1 by 8 multiplied by 8 plus. Are everyone clear how the face atom, the atom present at the face, is shared by only 2 cubes? किसी को इस पे प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? फेस पर जो एटम है वो 2 क्यूब के साथ शेयर किया जा रहा है. किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? Okay, good. So 1 by 2 multiplied by the number of atom at the face. How many atom are there in the face? That is 6. 6. Okay. So what will the value of N effective? N effective will be 4. Number of atom at the body centered is 0. There is no atom at the body centered. ठीक है ना? Body centered नहीं है, ये face पर है. Okay. सर Yes. सर ये जो 6 एटम्स इन द फेस वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही. अगर मैं काउंट करूँ तो मैं आप इमेजिन करो, एक क्यूब आप इमेजिन करो फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? यस सर. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 तो हर एक फेस पर एक रखा हुआ है. 6 में ओके 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 ठीक है. ठीक है, हर एक फेस पर एक रखा हुआ है, बस सिंपल है. सो द N effective is 4. I'm writing here N effective is how much? 4. इसमें किसी को डाउट? Anyone have doubt? How we have find the N effective here? Okay. Now what we have done next? Next क्या किया था? कौन सा पैरामीटर फाइंड आउट किया? रिलेशन बिटवीन R and A. Okay. Tell me, anyone. First of all, for finding the value of R and A, what was the 3 step? What was the 3 step? First find the reference point. Reference point, good. Then See the nearest atom. very good. See the nearest neighbor atom and then make a biggest sphere considering those two. Okay. those 2 points. Okay. Yes, sir. So I am considering this as our reference atom. जो स्टेप बोला है उसी को फॉलो कर रहे हैं. I am considering this as our reference atom as origin. You can take anyone. Okay. Okay. Now tell me, which atom is nearest to this atom? कौन सा एटम है जो कि नियरेस्ट है इससे? फेस पर है जो. फेस पर means this one? नो सर, जो सबसे No, पहला sir. वाला है. This one? नीचे वाला. Yes, sir. This one? फेस. Yes, sir. Okay. उसके साइड वाला भी हो जाएगा. Yes, exactly. Number of atoms, all the atom which is present at the face, that will be the nearest neighbor. How? Let's suppose, देखो इस एटम के पास में कितने कैंडिडेट हैं इसके. जिसको नहीं समझ में आया मैं उसके लिए बता रहा हूं. ओके, जो समझ गए हैं that's good enough. See, if we consider this atom, how many atom are this closest one? इसके आसपास कौन है, कितने कैंडिडेट हैं? एक तो ये है, this one, number 1 candidate, which is at a distance. कितने डिस्टेंस पर है? A डिस्टेंस पर है, right? नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा है? Which one is the next candidate? This one. Okay, ये भी हो सकता है. So what will the distance between these two? √2a. √2a. इसको मैं नंबर कर देता हूं, ठीक है ना? 1 2. So 1 is at A, 2 at √2a. ये भी एक कैंडिडेट है, चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ बीच में. Okay, this atom is also a candidate. What is the distance between these two atoms? a by √2. A by √2. Why? This atom is present at the face diagonal and this atom is present at the half of the face diagonal, right? So if the distance of the face diagonal is √2a, then what will be the distance of half of the face diagonal? √2a by 2, that is a by √2. Clear है सबको? किसी को कोई problem? Anyone has a problem? How we have find the distance between these two atoms? Anyone? No, sir. Good. No sir. So we have find our nearest neighbor. These two atoms are the nearest neighbor, right? Step number 3, considering these two atoms make a biggest sphere. Okay, let's do it. Consider these two atoms. One atom we have taken, this is our reference atom.
and this is our nearest neighbor. Okay, so what is the distance between these two? The distance is a by root 2. ठीक है ना? क्लियर है सबको? डिस्टेंस कितनी है? What is the distance between these two atoms? A by root 2. So what was our last step? Considering these two atoms make a biggest sphere. So let's make it. मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए. And कुछ यूं बनेगा. Okay, let's suppose that radius is r. Radius is r. Simple. What we have done in last class. So r plus r, that is 2r. And this 2r will be equal to how much? किसके बराबर होगा ये? A by root. Root 2. A by root 2. So the relation between r and a is r is equals to a upon 2 to root 2. root 2. किसी को confusion, कोई problem, how this relation came? Anyone? सबको clear है? How we have find out r is equals to a by 2 root 2? Yes, बिल्कुल sir. बिल्कुल Yes, वैसा ही sir. कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ना एससी और बीसीसी के लिए. बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल. जो थोड़ा सा है ना मतलब समझने वाले वो तो बाद में स्टार्ट होंगे. NaCl, डायमंड, ये सब होते हैं. ये तो बहुत सिंपल है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ r we have found is r is equals to a by 2 root 2. So 2 things we have find out. What is our next target? What is our next target? क्या find किए थे? Atomic packing fraction. Atomic packing fraction. Okay, so let's start it from here. अभी फिर से बना देंगे. चलो, please everyone find out on your notebook what will be the atomic packing fraction. Is it quite easy? Okay, just follow the step which we have done in the last class. Please everyone find out on your notebook. इससे आपकी practice भी हो जाएगी. मैं यहाँ पे solve भी कर रहा हूँ. ठीक है ना? Please आप लोग उसमें solve करो. Atomic packing fraction. Effective number of atoms, that is N effective, multiplied by volume occupied by the atom in a unit cell. Volume occupied by atoms and divided by the volume of the unit cell, right? Volume of unit cell. So N effective is how much? 4. And that will multiplied by the volume occupied by the atom, that is 4 by 3 pi r cube. And this whole divided by the a cube, that because volume of the unit cell is a cube. Chalo, value rakho. Please everyone do this. Put the value of r here and tell me the fraction, value of the fraction. Please everyone do. Just value रखना है इस पे अब. 0.74. 0.74. Is everyone getting 0.74? Yes, sir. Multiplied by 4 by 3 pi, value of r is a by 2 root 2. Okay, it's whole cube. And this whole divided by the a cube. ठीक है ना? A cube will be cancelled out from numerator and denominator. And when you will solve this fraction, you will get 0.74. Anyone had doubt in this concept? ये कैसे आया है? Atomic packing fraction, how we have find the atomic packing fraction 0.74? Anyone has doubt? किसी को doubt है? ठीक है ना? And if you write in the term of percentage, it will be 74%. Okay, and one more thing I told you, that any packing fraction above 70% consider as the tightly packed. Tightly packed. Okay, so this is the tightly packed structure. This is the tightly packed structure. 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखो. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, if anyone has problem, please they can ask. ये आगे बढ़े? आगे बढ़े? Okay. Yes, sir. Okay. So let's write the packing fraction, atomic packing fraction, and this is
0.74. Now, what is our next target? Coordination number, second nearest neighbor and third nearest neighbor. Let's see. Okay, can anyone tell what will be the nearest neighbor? Nearest neighbor तो find out ही कर चुके हैं ना, radius निकालते टाइम. एक बार फिर से बना लेते हैं. एक्सक्यूज मी सर, Yes. आपने इससे पहले क्या पढ़ाया? बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू. अच्छा, नेटवर्क इशू आपकी तरफ. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट? इन द लास्ट क्लास. एटॉमिक, वो समझ में, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बाद. नहीं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बाद तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ. एटॉमिक Okay. पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम देखने जा रहे हैं व्हाट विल द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट विल द सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये सारी चीजें. ठीक है, ओके. सो 8 atoms, that is at each corner, and atoms present at the face also. Yes, आप ही लोग बताओगे. चलो बताओ. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड आउट तो कर ही चुके हैं. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, that is a by root 2. by सब लोग क्लियर हो इस बात से? yes sir. कौन सा होगा? ये होगा, this one and this one. ये इसका नियरेस्ट नेबर होगा. Okay, how many nearest neighbor will be there? How many nearest neighbor will be there? 12. कितने? 12. 12 होंगे. पिछली क्लास देखो जरा, लास्ट क्लास में बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट है. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड सिंपल क्यूबिक थॉरोली, you can do BCC and FCC in a flow. ठीक है ना? मैंने कोऑर्डिनेट लिखाया था ना, I just wrote the coordinate there. ठीक है ना? Yes sir. ठीक है ना? बिल्कुल उसी है, उसी तरह है. देखो मैंने आपको ये भी बताया था ना उस टाइम पे कि the number of nearest neighbor which will be present at the face diagonal उतने ही होंगे कितने? हाफ ऑफ द फेस डायगोनल. ठीक है ना? एक स्टूडेंट ने शायद पूछा भी था, उसमें डिस्कशन भी मेरा हुआ था, मैंने बताया भी था. आई टोल्ड हर दैट the means the atom present at the face diagonal, let's suppose there is a means how many face diagonal is there for this reference atom. इसका जब भाई जिसका एक reference मतलब एक face diagonal है ना, उसके corresponding उसका mid point भी एक ही होगा ना. Okay, so you can see in the BCC or in the simple cubic lattice we have made a thorough discussion for that. So number of nearest neighbor, what will be the number of nearest neighbor? coordination number कितना होगा FCC का? 12 sir. 12. Number of nearest neighbor, 12. And this is also called what? This is also called what? Coordination number. This is also called coordination number. Okay. Okay. Yes sir. Okay, chalo. Tell me, second nearest neighbor distance. A. Second nearest neighbor distance. A root 2. A root 2. No sir. A. A root 2 तो A से बड़ा हो गया है ना, वो तो दूर होगा. Okay, A root 2 is bigger than A. A root 2 means 1.4 times A, and A is shorter than 1.4. Okay, so second nearest neighbor distance will be second nearest neighbor distance. That will be A. कौन सा होगा? This one. A. और जो भी A distance पर होंगे. And how many second nearest neighbor will be there? 6. 6. 6. सिंपल है, डिस्कशन कर चुके हैं सिंपल क्यूबिक में, BCC में भी कर चुके हैं. ओके, सो नंबर ऑफ second
nearest neighbor. Number of second nearest neighbor, that will be 6. किसी को प्रॉब्लम है? ये तो बिल्कुल समझो रिपीट ही हो रहा है ना. प्रॉपर्टी इन तीनों की प्रॉपर्टी ऐसी है, सिंपल क्यूबिक, BCC एंड DFCC, ऑल थ्री हैव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट. दे कैन टच ईच अदर प्रॉपर्टी. जो जिसका सेकंड नियरेस्ट नेबर को वो किसी का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो इस किसी का थर्ड नियरेस्ट नेबर वो किसी का सेकंड नियरेस्ट नेबर. ओके, सो ये सारी चीजें हम कोऑर्डिनेट के साथ भी लास्ट क्लास में कर चुके हैं. ओके, सो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए. एंड स्टिल इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम आई कैन टेल हिज और हर. क्लियर हो सब लोग? एवरीवन इज क्लियर हाउ दिस 6 इज कमिंग? सर ये a/√2 का 12 10 आ रहा है सर, वो समझ नहीं आ रहा. इसको मैंने ऐसे बताया था, आप इस तरह से समझ सकते हो. देखो, आप लास्ट क्लास आपने अटेंड किया था? डिड यू अटेंड हाँ लास्ट क्लास? ये ओके, सो सिमेट्री से. हाँ, सिमेट्री से ही आप देखो, मैंने आई थिंक आई जस्ट नोट यू डाउन द ऑल 12 कोऑर्डिनेट्स, राइट? मैंने 12 कोऑर्डिनेट्स भी लिखाए थे, यस सर. है ना? यू कैन सी देयर. Yes, sir. इट्स जस्ट मींस उसी तरह होगा. कोऑर्डिनेट सेम नहीं होंगे ऑब्वियसली. वो अगर मींस फेस डायगोनल पे था, दिस इज हाफ ऑफ द फेस डायगोनल, कोऑर्डिनेट्स नहीं सेम होंगे, बट सिमेट्री बिल्कुल वही होगी. सिमेट्री जस्ट बिल्कुल उसी तरह होगी. लेट्स सपोज आई आल्सो टोल्ड यू दैट यू कैन अज्यूम 4 नियरेस्ट नेबर एट वन प्लेन. तो अगर एक प्लेन पर 4 हैं तो उसी सिमेट्री से 3 प्लेन पे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे. ठीक है ना? आप एक बार देखना उसको, अगर स्टिल नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी ना पर्सनल डाउट इन व्हाट्सएप. ओके, आई कैन टेल यू. ओके Yes, sir. ओके. इससे क्या होगा ना, अगर नहीं समझ में, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर आपको सोचना उसके बारे में. ठीक है, Yes, sir. ओके. थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a√2. √3a/2. √3a/2. a√2 सर. बॉडी डायगोनल के सेंटर पे कहाँ रखा हुआ है एटम? वेयर इज एटम प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल के सेंटर की तो बात ही नहीं हो रही है ना. अच्छा, आप इस एटम से नहीं कंफ्यूज हो रहे हो? दिस एटम इज एट द फेसेस. ओके, Yes, sir. किसका डाउट था ये? नो इशू, आप क्लियर कर सकते हो. आई एम No, टेलिंग. sir. Clear. ओके, क्लियर है ना? Yes. बॉडी Yes. डायगोनल का कोई रोल ही नहीं है इसमें. तो उसके भाई बॉडी डायगोनल कहाँ आया था? दैट वाज कम इन द पिक्चर इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. वहां पर एक एटम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट था, राइट? सो वहां से हमारी डिस्टेंस √3a/2 हो गई थी. बट हियर देयर इज नो एनी एटम एट द बॉडी सेंटर. ओके, सो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, व्हाट विल बी थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? a√2. a√2, sir. गुड. थर्ड nearest neighbor, third nearest neighbor distance, and that will be a√2. Okay, understood? कितने होंगे? How many? 12. 12 exactly, right. 12 होंगे. किसी को डाउट है? अरे पहला वाला याद करो ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस याद करो, अभी फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही 12 आया था ना. वी हैव फाइंड आउट द 12. Yes, sir. Yes, sir. तो जितने हाफ ऑफ द फेस डायगोनल, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फेस डायगोनल. सिंपल है. सिमेट्री बिल्कुल वही होगी. सिमेट्री वही होगी. द नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर विल बी 12. नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट neighbor atom is equals to how much? 12. डाउट है किसी को? anyone has doubt? anyone? No, sir. There is a guy who means who told me that means I should use the means English language more preferably. So where are you, brother? Are you listening me? Are you comfortable? Hello? Okay, I think he's not here.
If anyone is everyone is comfortable now with the language preference, Hindi or English, is comfortable for Yes. everyone? Is comfortable for Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes. Good. Hello, sir. Yes. Sir, can you please say the third nearest neighbor atoms? I'm not getting the answer, sir. Sorry. Third nearest neighbor atoms. Okay. I can't understand. Third nearest neighbor atom you can't understood. Yes, sir. See, just while finding the relationship between R and A, I told you there's a 3 candidate which is nearer to this atom, right? Yes, One is this, which is at a Yes, distance, sir. which is at a distance how much? This is at a distance A by root 2. A by root 2. Okay. Yes, sir. And if we see further from A by root 2, which atom you can say which is nearest to this atom? Whether A, it is this second. or Yes, sir. this. This one, no? This one, sir. Yes, This sir. one, which is at a Yes. distance A. A. Now tell me, is there any atom which is nearest to this reference atom which is not Diagonal at the atom. face diagonal? ऐसा नहीं है ना, जो face Yes, diagonal sir. पे वही इसके nearest होगा ना, तीसरे नंबर Yes, पे. sir. So that will be the distance of this how much? इसका distance कितना होगा? Root 2. Root 2 है, तो वही तो हुआ है. That is A root 2. This is our first, this is second, this is third. That is I get, sir. But I'm not getting number of third nearest neighbor atoms. Number of third nearest neighbor atom. Okay. Okay, I'm telling you again. Have you taken the class of simple cubic lattice? So that's why I'm asking. Okay. How we have find the second nearest neighbor atom in the simple cubic? सेकेंड नियरेस्ट नेबर में सिंपल क्यूबिक में सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया था भाई? ये हमारा नियरेस्ट नेबर हो गया था. दिस वाज आवर नियरेस्ट नेबर व्हिच व्हाट हैज द डिस्टेंस A, and Yes, sir. after that which was the second nearest? Root 2A. Yes, sir. Root 2A face diagonal. And what was the third nearest at the body diagonal? Yes, sir. बिल्कुल वही सिमेट्री तो फॉलो हो रही है ना यहाँ पे. बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम सिमेट्री इज फॉलोइंग हियर. भाई फेस सेंटर्ड पे एटम आ जाने की वजह से इन दोनों की सिमेट्री पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ जाएगा ना. अंडरस्टूड? Just see once again the simple cubic lattice. Okay, there I have mentioned the all 12 coordinates. If you are noting down in your notebook on which you have completed your simple cubic lattice, just see there I have noted down all 12 coordinates there. Okay, मैंने वहां पर सारे 12 जो 12 कोऑर्डिनेट्स है उसको मैंने मेंशन किया था. बिल्कुल वही यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल. ठीक है ना? यू कैन ऑल्सो से द थर्ड नियरेस्ट नेबर ऑफ FCC is equal to second nearest neighbor of simple cubic because they are equal. Yes, sir. They are equal. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. And still anyone has problem they can ask me on WhatsApp. Okay, but I think simple cubic में हमने डिस्कस कर दिया था, है ना, हर एक चीज को. बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है सिमेट्री से रिगार्डिंग, आई कैन डील दैट. ओके, व्हाट्सएप पर हम उसको डील कर सकते हैं. बट मैंने उसको बहुत ही अच्छे से समझाया था. आई गेस सिंपल क्यूबिक आपको अगर अच्छे समझ आ गया हो ना तो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है ना? दे बोथ आर, ये कहीं ना मैच ही कर जाते हैं. ओके, देखो आप खुद ही देखो ना, थर्ड नियरेस्ट नेबर जो FCC का है वो सिंपल क्यूबिक का क्या है? सेकंड नियरेस्ट नेबर है. ठीक है ना? ऐसे भी अभी आप देखोगे तो आपका जो इसका जो सेकंड है वो उसका कहीं कुछ और मिलेगा. भाई देखो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो. सिंपल क्यूबिक कैसे बना था? हाउ वी हैव ड्रॉ द सिंपल क्यूबिक? जस्ट क्यूब एंड एटम एट ईच कॉर्नर. यही तो था ना सिंपल क्यूबिक, यही था सिंपल क्यूबिक हमारा. अच्छा, वहां पर हमने सब कुछ फाइंड आउट किया, इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े. वी मूव वन स्टेप फर्दर. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या आया स्पेशल? आपसे अगर मैं पूछूं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में स्पेशल ऐसी कौन सी चीज आई जो सिंपल क्यूबिक में नहीं थी? सर That बॉडी is के सेंटर पे एटम। बॉडी के सेंटर पे एटम.
ठीक है ना, बॉडी के सेंटर पे एटम। तो जब बॉडी के सेंटर पे एटम आके बैठा तो ये हुआ कि ठीक है मैं प्रेफरेंस आपको देता हूँ, आप नए हो ना, हमारे गेस्ट हो, मतलब ऐसे करके आप समझ सकते हो, यू आर गेस्ट, मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ। तो नियरेस्ट नेबर उसका कितना बन गया था, व्हाट वाज द नियरेस्ट नेबर, √3/2। Yes. एंड व्हाट वाज द सेकंड नियरेस्ट? वही ये पर ओके, ठीक है ना। सो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही हो रहा है भाई, हमने एक सिंपल क्यूबिक बनाया, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एटम एट द फेसेस, यही तो आ रहा है ना, एटम एट द फेसेस। तो हमने उसको प्रेफरेंस दे दिया, अच्छा ठीक है नियरेस्ट नेबर आप हो, आप हमारे नियरेस्ट नेबर हुए। उन्होंने कहा हाँ हूँ, ठीक है आप नियरेस्ट नेबर ले जाओ अपने पास। सेकंड और थर्ड कौन बचा, सिंपल क्यूबिक वाला ही तो बचा ना। समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay, so this is very trivial. So this was all about our face centered cubic lattice. I'm writing down all the information which we have got for the FCC. Then we will do the problems which I have sent you on your WhatsApp group. Okay. First of all, I'm writing down all the stuff which we have got here. So let's start the problem. I can use my phone also. Please, everyone, see your WhatsApp group. IIT-JAM question number 9 means IIT-JAM 2013 question. सबको मिला? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just solve it on your notebook. आप सब लोग सॉल्व करो, मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ. सर क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा था Yes, आपने? there is a question number 9. This a question number 9 came in IIT-JAM 2013. Don't worry, we will go one by one. IIT-JAM, GATE, NET, we will cover all the examination question. Don't worry, okay? नेट वाली मत सोचना सर जैम वाले आप करा रहे हो, नो, सब कवर होगा, जेस्ट टेफर सब कवर होगा, डोंट वरी. सो क्वेश्चन नंबर 9 IIT-JAM 2013. Fraction of volume unoccupied in the unit cell of BCC lattice. Fraction of volume unoccupied in BCC lattice. The question Option is A, sir. IIT-JAM 2013. Option C. ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, और कोई? चलो सॉल्व करो सब लोग. फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम unoccupied in BCC lattice. In BCC lattice. Okay. What is our option? Option A is 8 minus √3π/8. Option B is 6 minus √2π/6. Option C is √3π/8. And option D here is how much? π/3√2. हाँ भाई, आया किसी का? Anyone find out? किसने फाइंड किया? ऑप्शन ए आएगा A इसमें. आएगा सर. Option A, sir. सर ऑप्शन ए आ रहा है सर. ऑप्शन Yes, ए sir. आ रहा है. everyone are agreed that option A is correct. सबने सॉल्व किया है या किसी का नहीं सॉल्व हुआ है, मैं सॉल्व करूं? सबने सॉल्व कर लिया है? Yes, sir. नहीं सर अभी हमारा हुआ तो नहीं लेकिन हो जाएगा. ऑप्शन ए सर. नहीं देखो नहीं हुआ है. नहीं हुआ. ओके, आई एम सॉल्विंग, डोंट वरी, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सभी लोग कर लोगे तो ही मैं छोड़ूंगा, अगर किसी एक का भी नहीं हुआ आई विल सॉल्व. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. देयर इज अ टू मेथड टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मेथड इज जस्ट अ लिटिल क्रिटिकल थिंकिंग. सिंपल. पूछा क्या है, व्हाट इज देयर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम unoccupied, okay, in the BCC lattice. So for this, if we know the atomic packing fraction of BCC, what is the atomic packing fraction of BCC? 68%. 68%. Okay, Yes. that is 0.68. Yes, sir. 0.68 Yes, sir. portion has been covered. So which is unoccupied?
1 minus 32%. 32% will be. 0.32, 32%. Nothing have to do. Just simplify all this option. इन सब को ना सॉल्व कर लो डेसिमल में, देख लो 0.32 किसका आ रहा है, वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड है प्रॉपर सॉल्यूशन, जिस तरह इसने पूछा है। ओके, सो पहला वाला तो बहुत इजी है, सभी लोग कर लो, यू ऑल कैन डू। आई एम सॉल्विंग बाय द सेकंड मेथड। आप में से किसी ने सेकंड मेथड से सॉल्व किया? सबने सेकंड मेथड से ही सॉल्व किया है? पर एक और भी तो यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट वाला ही किया है? हाँ सर हाँ हाँ 1 माइनस जो हमारा पाई√3/8 कर देंगे तो भी तो कर लेंगे, तो ऑप्शन ए ही आएगा ना। हाँ सर, दैट इज उसी से आल्सो करा करेक्ट। था। वही उसी को मैं सेकंड मेथड बोल रहा हूँ, दैट्स अ सेकंड मेथड। ठीक है ना? देखो पहला क्या है, पहला होता है ना कि हाँ हमें कोई चीज लर्न है, दैट इज वी नो दैट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BC 68%, इट इज 0.68। तो दैट व्हाट विल बी द अनऑक्युपाइड वॉल्यूम, दैट इज 1 माइनस 0.68। भाई अगर 68% कवर है तो खाली कितना बचा, अनऑक्युपाइड कितना बचा? 32 बचा। 32। ओके, सो वहां से क्वेश्चन 1 मिनट में या 30 सेकेंड में ही हो जाता। बट द सेकेंड मेथड इज वॉल्यूम, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम unoccupied. Okay, so volume unoccupied means I'm solving completely here. Please see everyone. Volume unoccupied. किसी का माइक ऑन है एक्चुअली, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। वॉल्यूम अनऑक्युपाइड, वॉल्यूम इसको हटा देते हैं। वॉल्यूम अनऑक्युपाइड कैसे आप निकालोगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, सिंपल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, चलो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, भाई यही होता है ना, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स कैसे निकाल लेते थे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते टाइम? एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन एटम, 4/3 pi r. 4/3 पाई आर क्यूब, यही था ना? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए? सॉरी, बीसीसी है, बीसीसी है। A is equal to 4R upon root. √3/4a, r इज इक्वल टू, देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, √3 बीसीसी के लिए क्या था? r इज इक्वल टू √3/4a। See guys, I'm telling you again, you have to memorize all these relation, okay? वरना सोच लो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, अगर आप इसको मेमोराइज नहीं करोगे इट विल टेक यू 5 to 10 मिनट्स। फिर आप पूरा यूनिट सेल बनाओगे, नियरेस्ट नेबर मत करना वो सब, प्लीज मेमोराइज दिस, ओके? ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट मेमोराइज, इसको मेमोराइज करना, दिस इज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर, a cube minus n effective for BCC 2, 4/3 pi r cube, that is 3√3/64 and a cube। ठीक है ना? ओके, चलो सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व इट। a cube माइनस a cube भी आएगा, चलो इसको कॉमन टेक, वन a cube is common, 1 minus how much? 3 will be cancel out and 8 here, so this will be pi√3/8, pi√3/8, and that is a cube into 8 minus pi√3/8। ठीक है ना? अच्छा क्या पूछा है? फ्रैक्शन पूछा है ना, बस a क्यूब से डिवाइड कर दो, सो दिस इज अवर फ्रैक्शन, दिस इज अवर आंसर, 8 minus √3/8। सबको क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ है? एनीवन, किसी को प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड, इससे अच्छी क्या बात है, सबको क्लियर है, गुड। लेट्स ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 11, IIT-JAM 2019, IIT-JAM 2019 क्वेश्चन नंबर 11।
हो जाएगा? जस्ट डू दिस एवरीवन एंड टेल मी योर आंसर। हो जाए फिर भी इसकी प्रैक्टिस करो, लाइटली नहीं लेना है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन एंड सॉल्व ऑन योर नोटबुक। आई एम सॉल्विंग हियर ऑन द बोर्ड। आवाज आ रही है सबको? You said question number Yes, 11, sir. na? Yeah, question number 11. I am Okay. dictating sodium exhibit body centered cubic lattice crystal with atomic radius 0.186 nanometer. Sir, answer is 0.43 nanometer. 0.43 Nanometer. nanometer. Is everyone getting this? Are everyone getting this? सबका आ रहा है ये? Solving, sir, right now. Yes, please. 0.43 nanometer, sir. 0.4. Yes, sir. 0.43. हो गया? चलो, just try out question number. This is from IIT-JAM 2008. Question number 13. Question number 13. Question number 13. 1-3. देखो, देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन। चलो ये तो खैर IIT-JAM के, आपको होगे सर IIT-JAM के क्वेश्चन हैं, नेट वाले बोलेंगे। अभी आपको नेट के भी दिखाता हूँ। हो गया ये ना? √2 सबका आया? एवरीवन गॉट √2? ठीक है ना? बस रेशियो पूछा है सेकंड नियरेस्ट नेबर और नियरेस्ट नेबर का। सब लोग कंफर्टेबल हो? आ रहा है ना सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं सॉल्व करूं बोर्ड पे? करना ही क्या, डिवाइड तो करना है। चलो, ओके। See, I am giving you a homework, question number 7 of GATE 2016, जो दूसरा है, दूसरा स्क्रीनशॉट, उसको देखो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ GATE 2016 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबको मिला? दिखा सबको? Yes, sir. Everyone able to see that question? Atoms which can be assumed to be hard sphere of radius are, ये वाला। Yes, sir. विदाउट सॉल्यूशन, बिना सॉल्यूशन देखे इसको आप सब लोग सॉल्व करोगे और मुझे ग्रुप में भेजोगे आज से कल के बीच में। ओके, दिस क्वेश्चन इज Okay, sir. होमवर्क। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। नाउ, अगर नेट वाले ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम लोग के लिए बढ़िया क्वेश्चन लाओ, जस्ट सी द नेट 2019 जून, द थर्ड स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, देख लो ये क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर ये 3.5 में पूछा गया या 5 मार्क्स में पूछा गया। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इट वाज इन 3.5 मार्क्स। नहीं, ये 5 में पूछा गया होगा। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 5 मार्क्स क्वेश्चन बिकॉज at that time the advanced portion of means the solid state physics, condensed matter physics was completely the advanced portion. So it is actually a 5 marks question. Just see the question. The third nearest neighbor distance in BCC. √2. √2a. This was a question for 5 marks. Okay, √2a. देखते ही लगा सकते हो, बट आप ये कब कर सकते हो? जब आपको ये पूरा टेबल, मैं लास्ट में आई विल ड्रॉ द कंप्लीट टेबल हेयर when we'll complete the NaCl, diamond and hexagonal close pack. Then I will make a complete table here. You can also make by yourself. And I can suggest you, I'm suggesting you just memorize that table. Okay? All this concept is for you guys. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए है। बट जब बात क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आती है, वहां पर आपको पूरा टेबल लर्न होना चाहिए। ओके, एंड दिस फॉर जैम एंड नेट, सबके लिए यही चीज है। ओके, Okay, sir. यस। सो आवर नेक्स्ट टाइम भी हो गया। NaCl स्टार्ट करने से फायदा नहीं है क्योंकि 5 मिनट में कुछ होगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो NaCl। ओके, NaCl कल स्टार्ट करते हैं और आप मुझे 2016 गेट का क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजना, ठीक है? कि जिससे नहीं होगा टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन मत देखना। पहले मैं कल उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस टुमारो फर्स्ट दैट क्वेश्चन जिसका भी नहीं होगा। ओके, बस एक बार खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। ओके, Okay, sir. Yes, sir. ओके, सी यू गाइस, सी यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, Thank you, sir. Thank you, sir.